Indian women's football stands at a defining moment. For the first time, India have qualified for the AFC Women's Asian Cup through the qualifiers. The tournament starts in Australia in March 2026, and there is more at stake. The quarterfinal winners will seal a place at the 2027 FIFA Women's World Cup. That means the World Cup dream is very much alive. At the heart of this journey is one of Indian football's most respected figures, Ashlata Devi. A former India captain and the first Indian woman to play 100 international matches, she has seen the struggle, the setbacks, and now the resurgence. In this interview, she speaks about belief, responsibility, and a turning point for the sport. Ashlata describes the qualification as a proud moment, not just for the senior side, but for Indian women's football as a whole. She points out that the senior, under-19 and under-17 teams have all qualified for the AFC Women's Asian Cup in their respective categories. For her, that signals progress at every level. It's a really proud movement क्योंकि अंडर 17, अंडर 19 सीनियर टीम AFC ऑलरेडी क्वालिफाई हो गया और ऑब्वियसली अभी हमारे वर्ल्ड कप के लिए भी हमारे ड्रीम अभी ज़िंदा है और इस टाइम पे हमें और भी मेहनत करना चाहिए जो हमारे सामने जो AFC जो है उसको वर्ल्ड कप तक लेके जाने की कोशिश करना बहुत ज़रूरी है. For years, women footballers in India have navigated limited infrastructure and little public attention. The journey has been far from easy. Ashlata knows this better than most. She says Indian women's football has struggled to reach this stage, but she believes that real support will come only when the team delivers on the big stage. जब तक हम कुछ करके नहीं दिखाते तो हमारे सपोर्ट नहीं आते. तो मेरा मोटिवेशन हमेशा रहे कि जब हमें कुछ करके लोगों को नहीं देंगे तो हमारे लिए हेल्प करने कोई नहीं आएंगे. तो हमें ये टाइम है कि हमें लोगों के लिए और अपने कंट्री के लिए कुछ करके और उनको मेडल दिला के या कुछ बेटर करके उनको दिखाने के बाद ही उनकी सपोर्ट आना हमारे लिए बहुत ज़रूरत है. India are also entering a new phase under recently appointed head coach Amelia Valverde, who has previously worked with national sides abroad. Ashlata sees the appointment as a positive step. वो कोच काफ़ी हाई प्रोफाइल कोच है. ऑलरेडी उन्होंने बाकी कंट्री के साथ भी काम किया है, नेशनल टीम के साथ. तो आई होप कि हमारे नेशनल टीम में भी और बेटर परफॉर्म करे इस साल AFC में और अच्छा खेले और अच्छा रिजल्ट लाए. The message from the dressing room is clear. Stay focused, improve standards, and compete fearlessly in Australia. At the domestic level, the landscape has changed as well. When Ashlata began her career, there were only a handful of clubs for women. Today, the number has grown to around a dozen. She believes stronger club competition is key to sustained international success. जब मैंने स्टार्ट किया था तब तो क्लब भी ज़्यादा नहीं थे. ऑलमोस्ट 5-6 क्लब थे. अभी ऑलमोस्ट 12-13 क्लब्स हो गई है और बाकी जो क्लब है वो लोग भी अच्छे करने की कोशिश कर रहे हैं और अच्छा भी कर रहे हैं. और आई होप कि ये हर साल और भी क्लब आए और हमारे कंपटीशन बढ़ते रहे और मैचेस ज़्यादा खेलने का चांसेस मिले तो और भी बेटर होगा. More clubs mean more players, more exposure, and better preparation for the international stage. Beyond the national team, Ashlata is also working to shape the next generation in her home state of Manipur through the Ashlata Devi Football Festival. It is a deeply personal mission. In her early days, long travel hours to her club affected her education. She does not want young players to face the same struggle. मैं ऐसा करना चाहती हूँ कि पढ़ाई भी साथ में और गेम भी साथ में खेले
क्योंकि एक बच्चे को लाइफ में एक ही चीज़ चूज़ करने का वो नहीं रहे, क्योंकि दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है, पढ़ाई भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आफ्टर रिटायरमेंट आप फुटबॉल हमेशा नहीं खेल सकते। रिटायरमेंट के बाद आपको पढ़ाई की भी ज़रूरत है। एज ए प्लेयर और एज ए सीनियर प्लेयर और एज ए नेशनल टीम प्लेयर मुझे लगता है कि आफ्टर रिटायरमेंट उनके लिए हेल्प करना ज़रूरी है। She says the response has been overwhelming. Parents are turning up in large numbers, something she rarely saw during her own childhood. Full sessions at the ground near her hometown will begin in March after registrations are completed. For Ashlata Devi and her teammates, the path ahead is clear. The AFC Women's Asian Cup in Australia is not just another tournament. It is a gateway to the FIFA Women's World Cup. If India can reach the quarterfinals and go beyond, history will follow. For a generation that has fought for recognition, this could be the moment that changes everything. The dream is alive, the belief is strong, and Indian women's football is ready to prove it belongs on the world stage.